Hi everyone, good morning. So this is our first session on the HTML where we are going to understand the syllabus of HTML, what are all things we will learn in the HTML, and then we will start from there. So it is very basic and we are going to start from very scratch. Okay, so let's see what is HTML. So HTML is one of the hypertext markup language which is mostly used for developing the web pages. Okay, so by using the HTML, we can basically create the web page and we can create multiple web pages for our website. And HTML will mainly help you to add the contents and create the structure of your web page. Okay, if you want to apply the formatting to your web page, you can go with the CSS. Okay, so let's see how we can start with the HTML. First of all, what you can do, go to your folder structure. Okay, let's say I'm going to some folder structure here, and here I'm going to create one project. So let's right click, new folder, create new folder. Let's say sample project something. Okay, so in this you can create the HTML file in Notepad. Okay, just right click, new text document, and create the HTML file in Notepad like index.html. Okay, now if you want to write the HTML code, you have to open this file in any IDE. So you can use Notepad IDE, you can use Notepad++, you can use Visual Studio Code, you can use Visual Studio. Okay, I would suggest you should use the Visual Studio Code only, because for the front end development we mainly use that IDE only. Okay, so what you can do, just go here and type CMD. Okay, as soon as you open the command prompt, make sure your path is correct wherever we have that index.html file. Just mention here code space dot. Okay, it will open your folder as a workspace in the Visual Studio Code. Okay, this will only happen if you have the Visual Studio Code installed on your system. If you do not have that Visual Studio Code, then you will not see this. You will not able to use this code command. Okay, so in order to use this code command, you will have to install Visual Studio Code. Just go to your google.com, find download Visual Studio, and then it will help you to open that in the browser. Sorry, in the uh, browser. Yes, so once you go to the browser, just download it, install it, and now you are able to use code space dot command in your HTML in your PC. Okay, now let's try to develop the HTML file. So this is your HTML index.html file where you can add some commands like HTML, open and close. So this is opening tag, sorry, HTML. Okay, so this is your opening tag, this is your closing tag. So HTML page always start with the HTML tag. Okay, and HTML tag. So whatever tag is having angle bracket open, whatever we are having here, that is your tag name. And if you have the angle bracket open, forward slash and then tag name, it means this is closing tag, this is opening tag. HTML is a markup language where you will have to develop the web page by using the HTML tags. So tags, we can say the building block of your HTML page. Okay. By using the HTML tag, you can basically create the web page. You can put the component of your web page inside the HTML tag. Component of your web page by using the HTML tag. तो यहाँ पे कैसे होता है देखो, HTML open, HTML close. ऐसे भी टैग होते हैं, दो टाइप के टैग होते हैं, मैंने लिखा रहेगा यहाँ पे. So this is your syllabus. Okay. ओके नहीं है, एनीवेज आई विल टेल यू ओरली. तो टू टाइप्स के टैग होते हैं. पहला टैग रहता है
पेयर टैग। पेयर मतलब ऐसे टैग्स कि जिनको ओपनिंग है और क्लोजिंग है, सो वी विल कॉल देम एज अ पेयर टैग। और ऐसे भी टैग होते हैं जिनको क्लोजिंग ही नहीं होता है, सो वी विल कॉल देम एज अ एम्प्टी टैग। गॉट इट? सो पेयर टैग एंड एम्प्टी टैग. So pair tag mostly we can use to do the nested HTML tags, or if you want to add some content inside the opening and closing, so we will call them as a pair tag. और empty tag मतलब कि जिनके अंदर content नहीं डाल सकते. Okay, so that is empty tag. I will show you how we can write the empty tag. Okay, so let's write the HTML content. So HTML tag should be your root tag of your page. Inside this we can have head, head open and head close. Yes. ओके, दिस इज हेड ओपन, हेड क्लोज। ये हो गया हेड सेक्शन। इसके अंदर रहेगा अपना बॉडी। ओके, हेड के अंदर रहता है टाइटल। ओके, वेलकम टू एचटीएमएल, ये हो गया टाइटल। और बॉडी के अंदर वी कैन जस्ट बेसिकली राइट द वेरियस एचटीएमएल कमांड्स। सो वी कैन हैव दिस इज, या फिर हेलो वर्ड लेट्स से। ओके, देखो अभी क्या है अपने पास, एचटीएमएल, उसके अंदर हेड, हेड के अंदर बॉडी। ओके, और हेड के अंदर टाइटल भी है। So this title is basically to display the text in the title bar. Okay, and this body part is basically to display the content inside the HTML web page. Okay, as a inside the body part. So let's run this project. How to run? You can just go here, double click on your HTML file. That's it. Okay, you can see now we are basically displaying welcome to HTML in the title bar. We are displaying hello world in the body part. Okay, so this is how you can create your sample web page in your PC. What we did, we have basically just create one index.html file. कभी कभी क्या होता है आपके पीसी में कुछ सेटिंग रहता है, ऐसा मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ऐसा कुछ फोल्डर सेटिंग्स रहते हैं कि जिसमें एक्सटेंशन विजिबल नहीं होता है। ओके, लेट मी चेक। या ये जो है ना फाइल एक्सटेंशन नेम, ये चेकबॉक्स चेक नहीं रहता है। तो अगर चेक नहीं रहेगा तो योर फाइल नेम कैसे दिखेगा? फिर इंडेक्स दिखेगा, यहाँ पे HTML नहीं दिखेगा। तो क्या होता है, स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पे राइट क्लिक करके रिनेम करते हैं उसको। ओके, ऐसा, और इसमें डायरेक्ट ऐसा HTML डाल देते हैं, डॉट HTML। ऐसा डालने से क्या हो जाता है, सो दिस HTML इज नॉट द एक्सटेंशन, दिस इज योर फाइल नेम इटसेल्फ। सो कभी कभी ये चलता नहीं है, उनको लगता है कि हमने सेम वैसे ही ट्राई किया जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया, जैसे मैंने आपको बताया उसी टाइप से आपने भी डाला है, लेकिन फिर भी ये नहीं चल रहा है। जैसे कि लेट मी डू इट अगेन। ओके, मैंने कॉपी करके रख दिया, डिलीट। ओके, लेट मी ऐड दिस इन नोटपैड। ओके, अभी फिर से ट्राई करते, राइट क्लिक, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। राइट, क्या हुआ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मैंने नाम दिया, लेकिन फिर भी इट इज नॉट शोइंग द क्रोम आइकॉन हियर। क्यों? बिकॉज वट एवर वी हैव एडेड हियर, that is only name of your HTML file, but you will have to set the extension as well. इसका एक्सटेंशन टेक्स्ट ही है, देखो। ओके, क्या बोल रहा है ये, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। सो एक्सटेंशन चेंज करना बहुत जरूरी है। सो एक्सटेंशन चेंज करने के लिए सबसे पहले आपके पीसी में ये देखो कि यहाँ पे ये फाइल नेम एक्सटेंशन को चेक है क्या। ये अगर चेक रहेगा देन यू विल सी द एक्सटेंशन along with the file name in the folder. लेकिन ये अगर चेक नहीं रहेगा ऐसा, तो आपको एक्सटेंशन नहीं दिखेगा। अगर एक्सटेंशन नहीं दिखेगा देन यू कैन नॉट मॉडिफाई दैट। सो ऑलवेज मेक श्योर टू हैव दिस चेक बॉक्स चेक। अभी आप देख सकते हो इसका नाम क्या है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट टीएक्सटी। सो दिस टीएक्सटी की बजाय हमें एचटीएमएल डालना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप इस फाइल को एचटीएमएल में कन्वर्ट कर सकते हो इस टाइप से।
Now you will see the Chrome icon. It is very basic but very important. Okay. Now अगर आपने ये फाइल को ओपन किया यहाँ पे, then if you put your code, you can see the code in the browser like this. Okay. So this is very basic and hello world program in HTML. Let me stop the sharing. Sorry, stop the recording.